अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद तारिक मुजाहिद है। मैं तौहीद स्कूल का ट्रस्टी हूँ। मैं और मेरे साथ हमारे चेयरमैन तौहीद ट्रस्टी के अब्दुर्रहमान मुल्ला साहब हैं। हम लोग तौहीद स्कूल से एक इवेंट कर रहे हैं जिसका नाम है तौहीड्स उड़ान। तौहीड्स उड़ान ये हमारे बच्चों के अंदर जो है बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से बने, ये काबिलियत को नुमाइश करने के लिए हमने ये चिल्ड्रंस डे का ओकेशन को 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे है जिसको सेलिब्रेशन करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें से हमारी जो खुसूसियात है जो हम दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को बहुत ही अहमियत दी है। तो हम भी हमारे बच्चों के अंदर बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से की जाती है, प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कोई चीज़ खुद कैसे बनाएं, इनोवेट कैसे करें और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, वो मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका हमने नाम दिया है तौहीड्स उड़ान, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो बच्चों के अंदर खूब जो है ख्वाब होते हैं, वो अपने ख्वाब को किस तरह से पूरा करें, एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं और हमारे चेयरमैन साहब आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस इवेंट में शामिल हों। आप देखें हमारे बच्चों ने किस तरह से नायाब चीज़ें बनाई है और वो चीज़ आप ख़ुद एड्रेस कर सकते हैं और इनको एनकरेज करें। ये हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब जो है तौहीद स्कूल सुबह 10 बजे इसका इनागोरेशन होगा और दोपहर 3 बजे तक ये रहेगा इंशाअल्लाह। इस दौरान आप कभी भी आ सकते हैं और ये मंटू रोड के अंदर 13 नवंबर संडे के दिन हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि चिल्ड्रंस डे मंडे आता है, पेरेंट्स और काफ़ी लोग संडे फ्री रहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको संडे में किया है। मॉर्निंग 10 to 3 PM जो है मंटू रोड ओल्ड मंटू रोड में तौहीद स्कूल के कैंपस में किया है और हमारा दूसरा कैंपस जो शिमला नगर की मस्जिद के सामने स्कॉलर्स एकेडमी जो है वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक है। तो आप दोनों जगह पे शरीक करें, दोनों जगह शिरकत करें। वहाँ पे बच्चों ने किस तरह से अपने हुनर को उभारा है और किस तरह से यूनिक चीज़ें उन्होंने बनाया है, आप खुद देख सकते हैं और उनको एनकरेज कर और भी इसको पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। You have seen today the campus of Tauheed is elevated. There are two feelings in every child's mind. One is about entrepreneurships and another is about zakat. They are doing this so that they understand what they mean by business. They have taken the help of their parents also, and they have also gone to the market and done certain things. They are very happy, parents are very happy, inshallah, and whatever they have got the profit, they are going to donate it from their own very hands. So inshallah, let us hope that this becomes a grand success and they inculcate the donation thing and sharing their happiness with the ones who really need it. Today on the occasion of Children's Day, we have organized an fun and fair event. Fun and fair event not only means over here that children are going to have fun. They have set up certain stalls over here. We have 3 basic stalls. One stall is about the food corner where homemade products are sold. And then we have a corner of artifacts. Artifacts all are made they are made up of waste, best out of waste, newspaper, straws, water bottles, plastic bottles, waste bottles, and they have made it. Ice cream sticks, you can see so many different artifacts they have made, and it is made by the children only, and they are selling it for very minimal price. Then there are dessert counters where children are selling lassi and custard and ice creams. Dessert counters are there. Then we have fast food counters. Children have made noodles, shawarma, burgers. Everything has been available over here. A very interesting fact of this is that there is also games corner. Children are playing certain games and they are enjoying it.
Okay. There is one corner which is for a selfie corner for very small children. That is also been over there. At the entrance you may find it counters, and then there are coupon counters where coupons are available. Then next to the coupon there is a literary fest where we have Islamic books, tasbih, janamas which are being sold, and the books, knowledgeable books. Then we have books Quran with the translations in Hindi, English and Kannada which are being given as hadiya. And then we have the next counter which is about EduSpeak. EduSpeak is my favorite counter because our children are speaking about importance of education. What kind of education they get at Tauheed, that is most important. Along with all the scholastic development, they are going to have a religious growth also over here. Every counter they do business, whatever profit they earn, the share of their profit, we have a tagline over here that is sharing your happiness with somebody who really deserves it. We had children from Vivekananda Society, the children who are deaf and dumb, and they were allowed to explore each and every stall free of cost. They really enjoyed it. They were very happy. We could see smile on their faces. That was our real motto. Not only these children, but the children from other society, weaker society also, they should have an opportunity to enjoy. Jazakallah.